Good morning, everyone. Online students. Good morning, ma'am. How many students are there in online session today? Yes, ma'am. Only you? Yes, ma'am. Okay. So let's start with section 6. CPC वाला जो कल का आपका एक पॉइंट था वो I have discussed with you, है ना, कि 5 को we have to look with CPC के provisions के साथ. ठीक है, तो 6 से हम शुरू करते हैं. 6 एक बार पढ़ दो फिर इसको कर लेते हैं फटाफट से. Sued by person dispossessed of immovable property. If any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person through whom he has been in possession or any person claiming to him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other titles that may be set up in such suit. No suit under this section shall be brought after the expiry of 6 months from the date of dispossession or against the government. No appeal shall lie from any order to decree passed in any instituted under this section, nor shall any review of any such order or decree be allowed. Nothing in this section shall bar any person from suing to establish his title, such property and to recover possession thereof. Okay. So write down. सेक्शन 6 को एलेबोरेट करके हम लिखते हैं. ठीक है जी. 5 हो गया तभी तो 6 कर रहे हैं. ये ना पढ़ने के नतीजे हैं जी. Where were you in the class yesterday? फिर क्यों नहीं पता? लिखिए जी. Under section 6, when a person is dispossessed, without his consent of immovable property without following the due course of law, then THEN, then either he or any person claiming through him may claim CLAIMING through THROUGH him may, comma, by suit SUIT, suit, comma, recover possession by filing a suit. देखो 2018 के अमेंडमेंट से पहले जो प्रोविजन था, फर्स्ट क्लॉज क्या था? If any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, then he or any person claiming through him may by suit recover the possession thereof. ठीक है, 2018 के अमेंडमेंट में बीच में इन्होंने through whom he has been in possession or any person words को ऐड कर दिया है. ठीक है, so this is the line which is the which may become the question for prelims also. हाँ, yes, जिसके द्वारा उसको पोजीशन दे दिया गया था वो भी उसके बिहाफ पर सूट फाइल कर सकता है. ये लाइन मैं अभी आपको लिखवा भी चुकी हूँ साथ के साथ. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स ऐड हुए हैं ही और एनी पर्सन के बाद थ्रू whom he has been in possession और any person, तो ये वर्ड्स जो ऐड हुए हैं ये वर्ड्स 2018 की अमेंडमेंट से ही ऐड हुए हैं. ठीक है, गॉट माय पॉइंट? आपके बेयर एक्ट में भी मेंशन होगा ब्रैकेट में दे करके.
तो ये पहली अमेंडमेंट यहाँ पर 6 सेक्शन के अंदर दी गई, ठीक है। क्योंकि अमेंडमेंट का तो एक अलग से ही आपको लेक्चर मैं दूंगी, जिसमें कि 18 की अमेंडमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं और पहले क्या था, वो एक इलेबोरेटिव स्टडी होगी जो कि कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे इसमें, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा। तो अब लिखिए जी इसकी एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 6। तो 2 एसेंशियल्स हैं इसके। नंबर 1, एनी पर्सन must be dispossessed of immovable property without his consent. Without his consent. Second, he must be dispossessed otherwise than in due course of law. Then he must be dispossessed otherwise than THAN in DUE course of law. ठीक है, तो इन दोनों एसेंशियल्स का मतलब क्या है। पहला कह रहा है कि he must be dispossessed of immovable property, ठीक है, because 5 and 6 talks about immovable property, and in this section he must be dispossessed from that property without his consent. उसकी consent नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। with his consent आ गया तो सेक्शन की वेटेज ही खत्म हो जाती है, इसलिए विदाउट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्लॉज कहता है ही मस्ट बी डिस्पोजेस्ड अदरवाइज दैन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, बिना कानून से यानी कि इलीगल तरीके से, दूसरे तरीके से उसको डिस्पोजेस किया गया है, ठीक है जी, लॉ को फॉलो नहीं किया गया है। तो इन दैट केस ऑब्वियसली दैट इज नॉट एज पर दी पार विद द लॉ। गॉट इट। चलिए जी पहले एसेंशियल को इलेबोरेट करके लिखते हैं। नंबर 1, want to switch it off? Kindly switch the, आवाज ज्यादा है इसकी ना, अब मुझे भी थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। सो फर्स्ट इज एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लिखिए जी, द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव the plaintiff has to prove, comma, that he has juridical possession, JURIDICAL, juridical possession, POSSI, POSSESSION, possession of the immovable property and defendant has taken possession of that immovable property without his consent. एक क्वेश्चन पूछती हूँ, a possession which is voluntarily transferred by the plaintiff to the defendant, is it be covered under section 6? No. क्यों? लिख लो अगर लिखना चाह रहे हो ये एक लाइन में, क्योंकि इसका एक केस लॉ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चाहे हेडिंग इसी में ही डाल लो। लिखिए, section 6 covers only
अगला पैरा लिखिए. Section 6 covers only that case where the plaintiff is unlawfully dispossessed of immovable property full stop. However, comma, where the plaintiff has given where the plaintiff has either 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 given the consent to the defendant for taking possession, or the plaintiff has voluntarily defendant for taking possession, or the plaintiff has voluntarily given possession to the defendant, then section 6 is not applicable and he cannot file a suit under section 6. ठीक है जी. इसमें केस लॉ है. In the case Sukhjit Singh versus Siraju Nisa, AIR 2001 MP. Siraju Nisa, मैं स्पेलिंग बता देती हूँ. SIRAJUNNISA, Siraju Nisa, AIR 2001 Madhya Pradesh 59. So in this case, facts are इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि टेनेंट ने मकान मालिक को खुद ही हैंड ओवर कर दिया था पोजीशन घर का. ठीक है. तो देयर वाज अ मैरिज ऑफ हिज सन एक्चुअली. देन आफ्टर मैरिज होने के बाद अभी वो वापस उसको क्लेम करना चाह रहा है कि मुझे ये दे दीजिए. कैन ही रिगेन द पोजीशन अगेन? इस बेसिस पर 6 के बेस पे नहीं मिल सकता उसको. ठीक है. लिख लीजिए, इसके फैक्ट्स के साथ लिख लीजिए. In this case, the tenant handed over the possession of premises to the landlord for, in this case, the tenant handed over the possession of premises, PREMISES, to the landlord for marriage of his son. Full stop. The landlord failed to hand over the possession again. The landlord failed to hand over the possession again to the tenant after his son's marriage. After his son's marriage, full stop. It was held that even though the tenant may have been deceived, DECEIVED, deceived later on,
but since he handed over the possession of his own volition, since he handed over the possession of his own volition, VOLITION, comma, he could not claim the possession again. He could not claim the possession again under section 6. Under section 6, full stop. Second essential लिख लीजिए इसका. He must be dispossessed otherwise than in due course of law. रिपीट करना. Second essential लिख लीजिए. He must be dispossessed otherwise than in due course of law. Than, THAN, than. एक होता है then, एक होता है than. Than expanded form में THAN, than बोलते हैं हम. Then एकदम से बोलना THEN. Okay. Another essential of section 6 is that the plaintiff must be dispossessed without following the procedure under law. Without following the procedure under law. Okay. Therefore, comma, where the plaintiff is dispossessed, therefore, comma, where the plaintiff is dispossessed without following law, he can file a suit under this section. So there was a case law. लिख लीजिए in KK Verma versus Union of India. K. Verma VERMA versus Union of India. AIR 1954 Bombay. BOM लिख देना है. ठीक है. So in this case, it was held by the Bombay High Court. That the possession of tenant even after the expiry of tenancy period, is juridical possession. Juridical possession क्या होता है? Which is legal in eyes of law. ठीक है. And hence the owner cannot throw him out without following the procedure of law. Full stop.
एक और इसमें केस लॉ लिख लीजिए जहां पर टाइटल का सवाल है कि टाइटल जरूरी है या नहीं है, ठीक है। सो छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए ताकि जब ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम आ जाए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और आपने ये टाइटल के बेस पे अगर आंसर देना है तब ये केस लॉ वहां पर लिख सकते हो, है ना। इसकी छोटी सी हेडिंग ये लिख लीजिए, केस लॉ बेस्ड ऑन title need not to establish under section 6 base heading ये लिखिए जी, case law where title need not to be established under section 6, ठीक है जी। केस है सनवाल राम SANWAL सनवाल राम RAM राम वर्सेस रामजन RAMJAN AIR 2016 छत्तीसगढ़ का केस है ये। हाँ जी, so in this case the court held that possession means legal possession which may exist with or without actual possession and with or without rightful origin. The plaintiff need not to establish his title full stop. It is enough to prove long standing peaceful possession, ठीक है। टाइटल की जरूरत ही नहीं है अगर वो पीसफुल पोजीशन में रह रहा है, सो दैट इज आल्सो इनफ अंडर सेक्शन 6 टू फाइल ए सूट इफ he has been dispossessed of that immovable property. Got my point? हाँ बिल्कुल, जबरदस्ती धक्के मार के निकाल दिया और ये कह दिया कि ये तो जी टेनेंट है। पहले वाले 5 में क्या था, ऑनर, ठीक है। और वैसे भी ये जो सेक्शन है ये समरी सूट फाइल होता है और वो था CPC के द्वारा फाइल होने वाला, जो कि लॉन्ग ड्रॉन सूट आप जिसको कह सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड। लेकिन 6 में क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ समरी सूट, ठीक है, क्योंकि ये 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइल करना है फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्पोजिशन फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो, क्या क्या नहीं समझ में आया इसमें? इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है, आपके पास टाइटल हो ना हो, आप बहुत टाइम से उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को अपने पास रखे हुए हैं, तो दैट मीन्स व्हाट, नोबडी कैन डिस्पोजेस यू आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। सिर्फ यही बताया है इस पे। ये सेक्शन का ये केस इसलिए लिखवाया है, कई बार क्या होता है स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है इसके क्वेश्चंस में। प्रीलिम्स में क्या है, ऑब्वियसली यू नो दैट इट इज अ काइंड ऑफ समरी नेचर। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में आपको मंडे को लिखवा दूंगी लिस्ट, ठीक है, जो भी इसके इंपॉर्टेंट है 6 तक के, जैसे मैंने आपको सोगा में लिखवाए थे सेम, ठीक है। एंड देन आफ्टर जो इसके और क्वेश्चंस बनेंगे फिर वो भी साथ के साथ, प्री और मेंस दोनों का मैं आपको साथ ही कॉम्बिनेशन कराती हूँ हमेशा,
ठीक है, एक और सेक्शन के साथ इसी के, हाँ हाँ वो तो देखो डेट, ये वो एडवर्स पोजीशन आपने पढ़ा है, फिर वो पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो। ये तो बिल्कुल बिगनिंग है ना स्पेसिफिक रिलीफ की, दैट इज व्हाट आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग ऑन दीज टू सेक्शंस। तभी 5 और 6 पे मैंने इतना प्रेशर दे रखा है कि 5 आपको बड़े अच्छे से समझ में आए, फिर 6 भी अच्छे से समझ में आए। ऑल्दो इट विल टेक 2 more days, मुझे कोई फर्क नहीं है, बट आपको समझ में आना जरूरी है। देन आफ्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एडवर्स पोजिशन। किसमें है मेंशन एडवर्स पोजिशन? लिमिटेशन के अंदर है, ठीक है। 25, 26, 27 ये तीनों सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन एक्ट के, आपको मैम कराएंगे वो, तो बड़े ध्यान से करना। लेकिन अगर आपने 5 और 6 अच्छे से पढ़ लिए, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन आल्सो, क्योंकि आपको यहाँ प्रॉपर्टी का पता लग गया ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस होने का क्या मतलब है। देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट दीज सेक्शंस विद अदर एक्ट्स आल्सो। जैसे कि सीपीसी में आपने अगर जाना है इंजंक्शंस कैसे लेनी है, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। वन मोर केस इसके साथ एक और लिख लो। क्या ट्रेसपासर को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है सेक्शन 6 के अंदर? सोच समझ के जवाब दिया, रीजन बताओ क्यों। चलो हाँ ना, प्रीलिम्स का तो आंसर चलो आपने दे दिया, वाई। लॉ के स्टूडेंट्स हो, रीजनिंग चलनी चाहिए ना साथ के साथ। ट्रेसपासर है इसलिए, ठीक है जी। 15 सालों से एक बंदा किसी घर में बैठा है, उसको उठा के बाहर फेंक दो, ट्रेसपासर है। ट्रेसपासर को 1 मिनट के लिए थोड़ी होता है। मैम अगर उसका ज्यादा रह गया ना तो हम कुछ भी खेल कर सकते अभी हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो? वो एक स्टेप आगे है, फर्स्ट स्टेप पे मैंने पूछा है अभी। तो लिमिटेशन देखो, वो तो आंसर चाहिए। मैम अगर कोई पीरियड है ना तो पहले पीरियड के लिए वो ज्यादा रह लेता है तो वो खुद भी सेट कर सकता है। वो एडवर्स पोजीशन होता है, और उसके लिए भी एक ग्रेवाल वाली नई जजमेंट आई हुई है। केस लिखो पर, अजय कुमार वर्सेस चंचला देवी। अजय कुमार वर्सेस अजय कुमार वर्सेस चंचला देवी, CHANCHALA, चंचला देवी, ठीक है। इन दिस केस it was held that, इसकी साइटेशन लिख लीजिए, AIR 2011 HP। In this case it was held that a person who is in settled possession cannot be summarily dispossessed, cannot be summarily dispossessed। हाँ जी, कुछ बदले अभी आंसर्स, full stop। settled possession creates such a right that even the rightful owner may recover only by taking recourse to a court of law, full stop। recourse to a court of law, full stop। The settled possession even of a trespasser
may be protected, full stop. अब आ गया समझ में? अब हाँ ना वाले कहाँ गए? ना वाले कौन थे? कोई भी नहीं थे? अच्छा अच्छा, रिकोर्स वर्ड आपने एक जगह पढ़ा हुआ है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मर्डर के एक सेक्शन में आपने एक्सेप्शंस में पढ़ा है, रिकोर्स, रिट्रीट, है ना? इसका यहाँ पर ये मतलब है कि जो कानून की शरण में चला जाए, तो वहां पे भी क्या था? रिकोर्स टू, यस, कोरिलेट किया करो वर्ड्स को, तभी सारे ग्रिल होंगे माइंड में। हाँ, जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी के पढ़ोगे ना, देन आपके और फंडे क्लियर हो जाएंगे कि आप क्या नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कोई भी स्टेटमेंट क्लास में देती हूँ तो कितने तरीके से देती हूँ, यू नो दैट थिंग ना, आफ्टर परसुइंग द लॉ। ठीक है, चलो जी, यहां तक समझ में आया? इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग है नहीं, ये बनाना पड़ा है। सो यस, हु कैन फाइल अ सूट? अब इसमें पॉइंट्स लिखते जाओ। Who can file a suit? बिफोर दी, पहले एक बार सुन लो थोड़ा सा, फिर आपको इजी हो जाएगा, फिर लिखवा भी दूंगी। बिफोर 2018 व्हाट हैपेंड, ये जो सेक्शन था इट वाज लिमिटेड, लिमिटेड टू द एक्सटेंट कि जिस पर्सन को डिस्पोजेस किया गया है उसकी प्रॉपर्टी से, वो ही सिर्फ फाइल कर सकता था सूट। ठीक है, कोई अगर उसका एजेंट है वो, और उसके बिहाफ पे अगर कोई बैठा है, ठीक है जी, या अपॉइंटी है, ही कैन नॉट और कुड नॉट, यू कैन से। ठीक है, बट आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट दिस वास्ट पावर हैज बीन गिवन अंडर दिस सेक्शन। तो अभी जो एक लाइन ऐड हुई है, और थ्रू होम, ठीक है, एज पर दी टाइटल जो अभी हमने लिखा है कि हु कैन फाइल अ सूट। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए मेंस में आपको, डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 6 एंड ऑल्सो डिस्कस द रेलेवेंसी ऑफ concept that who can file a suit under section 6। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही बन गया है यहाँ पर, क्योंकि अमेंडमेंट आ गई तो अमेंडमेंट से इसको बड़ा इलेबोरेट कर दिया गया है, तो कई लोग ऐड हो गए ना। अब ये तो लिखा नहीं कि कौन कौन, लेकिन और थ्रू होम और एनी पर्सन, इट लाइन दिस लाइन, यू नो, एक तरीके का यस, बहुत सारी पावर दे रहा है। पहले तो सिर्फ एक इनडायरेक्टली तो काफी ज्यादा पावर दे दी ना, अगर देखा जाए तो। और पहले क्या था कि जी जिसके साथ जिसको भी डिस्पोजेस किया गया है वो ही करेगा, लिमिटेड था। तो नाउ इट इज अ वास्ट सेक्शन, यू कैन से। लिख लो जी अब इसमें। अब तो मॉर्टगेजी को, लेसी को, इन पर्सन्स को भी जो है पावर दे दी गई है इसमें। ठीक है जी, देखिए पूरा ही एक नोट लिखवा दो इस पे। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, under section 6 of the act, prior to the amendment act of 2018, 2018 की अमेंडमेंट किस डेट को हुई है बताना जरा पलक। ट्री का क्वेश्चन है ये। October 31, 2018। After the class, I'll discuss something. A person who was removed, a person who was removed from actual possession or a person claiming through him, or a person claiming through him, comma, could file a suit in relation to, could file a suit in relation to such dispossession, full stop। अच्छा, under section 6 of the act,
prior to the Amendment Act 2018, comma, a person who was removed from actual possession or a person claiming through him, comma, could file a suit in relation to such dispossession, full stop. However, comma, the owner or its agent or other appointee or its agent or other appointee could not file a suit for recovery of such property once the tenant or lessee, etc., in possession of the property, lessee, Lessee, in possession of the property was dispossessed, full stop. By the Specific Relief Amendment Act 2018, comma, a title holder of immovable property. अब किस किस को पावर मिल गई देखिए, a title holder of immovable property or agent or appointee will have a right to sue for recovery of possession of immovable property रिपीट करना will have a right to sue for recovery of possession of immovable property as is available to a person who was, I repeat, a title holder of immovable property or agent or appointee will have a right to sue for recovery of possession of immovable property as is available to a person who was deriving, DERIVING, who was deriving possession through him. For example, tenant or mortgagee. कहाँ पे हो? Possession through him. Full stop. Example में tenant और mortgagee आप लिख सकते हैं, है ना? Under Section 6, इसी पे 2-3 लाइनें और लिख लीजिए. Under Section 6, possession can be actual or constructive. Full stop. In case of mortgage and lease, comma, the mortgagee or the lessee has actual possession, whereas the mortgagor or the lessor has constructive possession. Full stop. Therefore, comma,
where the mortgagee or lessee is wrongfully dispossessed, then is wrongfully dispossessed, then THEN, then suit under section 6 can be filed. कौन कौन कर सकता है? By him or by the mortgager or lessee. ठीक है? Can be filed either by him or by the mortgager or the lessor. अब पहला क्लॉज फिर से पढ़ लो, अब ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको. फर्स्ट क्लॉज, if any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law that we have discussed, then he or any person through whom he has been in possession, हो गया mortgagee mortgager वाला पॉइंट अब यहां पर क्लियर, or any person claiming through him may by suit recover possession thereof. So this is all about हाँ 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 बिल्कुल कर नहीं सकते थे, लेकिन 18 के बाद अब कितनी सारी, अब क्या हो गया कि जिसके द्वारा वो पोजीशन में आए हैं, अब मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी वाला पॉइंट आप पढ़ो फिर क्लियर हो जाएगा. जिसके पास एक्चुअल पोजीशन है और जिनके पास कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है, दे कैन फाइल नाउ. ठीक है? यस, क्योंकि वो एक्चुअल पोजीशन में है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिनका कंस्ट्रक्टिव है दे कैन आल्सो बिकॉज थ्रू होम दे हैज गॉट दी पोजीशन. ये इस लाइन का मतलब है. पहले क्या था कि जिसको निकाला गया वही करेगा, बट अब इसको एलेबोरेट कर दिया ना. दिस इज दी, ये सिर्फ फर्स्ट क्लॉज आपका हुआ है, बाकी के अभी 3 क्लॉजेस के पेंडिंग है. लेकिन कराने में तो इसको एक दिन में मैं कंप्लीट करा दूं कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर क्लियर नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं है, कितनी बार पढ़ोगे फिर इसको. ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो जी घर के लिए. Plaintiff must come with clean hands. Comment. Must come with clean hands. Comment. With the support of case law. मॉर्टगेजर कौन होता है? प्लेजी कौन हुआ फिर? पॉनर कौन हुआ फिर? एक काम करो, ये तुम्हारे डाउट्स बहुत ज्यादा हैं और ये क्लियर होने बड़े जरूरी हैं. मैं समझाऊंगी तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. लिखो ये सारे पॉइंट्स और ये कहीं पे और लिख लो, और ये डिफरेंस कल मुझे सबके चाहिए, मींस नेक्स्ट क्लास में लिखो. बेलर बेली, एक एक लाइन इनके बारे में पता होनी चाहिए. इट इज नॉट होमवर्क, इट इज जस्ट लाइक क्रिएटिव वर्क है ताकि आपको ये याद रहे चीजें. पॉनर पॉनी, बेलर बेली, BAILOR, बेलर बेली, ये कॉन्ट्रैक्ट के वर्ड हैं, ये आप पढ़ चुके हैं पहले, फर्स्ट सेमेस्टर में होगा ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो. और वो फिर भी अभी भी प्लेज कही जा रही है. वो कौन सा होता है? अच्छा, 75 तक हो गए. एजेंसी और ये रहते हैं अभी आपके. ठीक है ठीक है. बेलर बेली, पॉनर पॉनी, मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी, लेसर लेसी, वो तो फिर अलग हो गए ना, वो अलग चीजें हैं.
कितने हो गए? 5 हो गए हैं? एक और रहता है, एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट। अब एक और लिखो, अलग से लिखो अब, प्लेज, लाइसेंस, प्लेज, लाइसेंस, बेल, सॉरी बेलमेंट, फिर बेल में कहीं सीआरपीसी ना लिख दो ना, बेलमेंट एंड मॉर्गेज। ठीक है, ट्रस्ट, 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 ट्रस्टी बेनिफिशियरी, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, एक एक लाइन इनके बारे में लिख कर लेके आओगे। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स may leave the class.